we have one production EC2. What happens? Suddenly it is down. Suddenly it is down. Once it is down, that is an event. Okay? Once it is down, that is an event. Due to that event, CloudWatch is going to activate. Okay? Now, CloudWatch is going to trigger Lambda with IAM role. It is going to trigger the Lambda. Lambda is going to use SNS, simple notification service. With the help of SNS, it is going to send mail to your mail address. That is root mail address. Okay? That your server is down, please take care. So we have to create one production EC2. Then we have to create CloudWatch. Whenever production EC2 is down, CloudWatch is going to activate, and CloudWatch is going to trigger the Lambda. With the help of IAM role, Lambda is going to send a mail with the help of SNS, simple notification service. सर्वरलेस सर्वर मतलब वो एक फंक्शन रन करता है, जब रन करता है उसी टाइम एक सर्वर ले लेता है EC2. नॉर्मली वो एक एप्लीकेशन है, एक रिसोर्स है जो AWS प्रोवाइड कर रहा है, AWS मैनेज्ड, लेकिन वो कोई कंप्यूटर नहीं है. कंप्यूटर बिना वो कैसे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, एक फंक्शन को कंप्यूटर तो ले रहे हैं. और उस मैंने बता दिया ना, तुम ये लाइब्रेरी यूज़ करो पाइथन, तो पाइथन लाइब्रेरी यूज़ करने के लिए तो एक कंप्यूटर चाहिए. तो सर्वरलेस सर्वर, ये सर्वर नहीं है लेकिन यूज़ करता है सर्वर को. ठीक है? और ये ऑटोमेट है, मतलब ऑटोमेशन के लिए काम आता है. ठीक है? ऑटो स्केलिंग नहीं, ऑटोमेशन. ऑटो स्केलिंग अलग चीज़ होता है. तो चलो इसको देखते हैं प्रैक्टिकली. प्रोडक्शन EC2 क्या पूछ रहे हो? प्रोडक्शन EC2 क्या होता है सर? ये EC2 टॉपिक में है सर. प्रोडक्शन EC2 क्या होता है? नहीं मैंने ये EC2 नहीं पढ़ा था सर, इसीलिए. EC2 क्या है पहले बोलो. इंस्टेंस है सर. हाँ, तो प्रोडक्शन में जो इंस्टेंस है उसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन इंस्टेंस समझ में आया कुछ? जो 24/7 चलते रहते हैं, जैसे बैंकिंग सर्वर, रिजर्वेशन सर्वर. EC2 फ्री सर्विस. EC2 फ्री सर्विस. अच्छा 3, तो कुछ भी सर्विस बोलो ना, कितना सारा सर्विस है. याद है मतलब जो सिंपल है वो बोलेंगे ना, तो EC2 हो गया, S3 हो गया, और तीसरा क्या बोल सकते हैं? VPC. अच्छा ये वाला बोल सकते हैं. हाँ आप समझ गए क्वेश्चन से. लैम्डा बोल दो. लैम्डा भी बहुत अंदर जाएगा. EC2 S3 क्या बोलोगे? जितना भी मन में आता है बता दो ना. सर मैं ऐसा पढ़ूंगा कि EC2 is a virtual machine which used to run application
ओनली एप्लीकेशन होता है, डेटाबेस होता है. दिस इज द वर्चुअल मशीन. वर्चुअल मशीन तक ठीक है. उसमें क्या यूज़ होता है? एप्लीकेशन, डेटाबेस, कुछ भी. According to our configuration. देखो ये है बोटो, Software. ठीक है. दिस इज बोटो कोड, पाइथन बोटो, पाइथन 1 लाइब्रेरी. We are using this only for AWS service purpose. So let's start. As per our discussion, first we have to create one EC2 instance. So name is prod. This is a production server. Amazon T2 key pair. Prod key, PPK, networking, VPC default, A, enable, security group, prod security group, prod security group, SSH from my IP, 8 GB hard disk, launch. So one instance is going to launch, and this is my prod server. We have to create IAM role. Yesterday we create one role, Lambda role. We allow yesterday EC2 full access, Lambda basic execution, CloudWatch full access. Okay, I am going to add one more permission here. Attach policy, SNS full access. Because today we are going to add SNS also. So SNS full access. IAM role already there. So what are the permission? EC2 full, SNS full, Lambda basic, and CloudWatch full. This is total role. Okay. This role I am going to use where? In Lambda. So let's create simple notification service, SNS. Then I am going to create Lambda.
Then I am going to create CloudWatch. Okay, so our EC2 is ready. This is Lambda role, that is also ready. Simple notification service. सर अभी लैम्डा किसमें बना है सर? ये Lambda इसमें बना है, अभी लैम्डा बनाना यहाँ लैम्डा है, नहीं बनाया अभी तक. क्लाउड वॉच भी नहीं बनाया अभी तक. मैं SNS बना रहा हूँ. वही है सर. Standard name, my SNS name is suppose MN SNS 99. Create topic. Now you have to publish this. We just create one SNS. Subscription is required. Okay, subscription mean mail address related. So click on subscription. It is asking, this is the SNS ARN. What is ARN? AWS ARN full form. What is ARN? Amazon resource name. That is one unique name. Unique name of each and every resource. So now this is unique name of this resource, SNS. Next, protocol. Protocol. Which protocol? I am going to choose email protocol. Endpoint, that is your mail address. I am using my mail address because it is sending the mail to my mail address. Create subscription. So it is telling that subscription is pending, status pending. Why? Open mail address and check it. AWS send one mail, one notification AWS send it. Click here and confirm subscription. Right? Once it is over, back to your subscription and just refresh it. Check it, this pending option is confirmed. That means SNS and mail connectivity is okay. Fine. So SNS also ready. Topic. This is your SNS. If you click here, this is the ARN. We have to use this ARN. Now let's create Lambda. Create function from scratch. Function name Lambda SNS. Runtime, which language we are using? Python. x86. Permission, we have to change our own role. Which role? Lambda role. Create function. This is the function options. Delete it and copy your code. Paste it. But within this, we have to mention our SNS, that ARN. That means Lambda is going to connect which SNS? Multiple SNS is there. We are going to connect this SNS. Which SNS? Back to SNS. Copy this ARN.
lambda, this is my SNS. And what is the meaning? Message. Message is prod server stopped, please take care. Okay, this is SNS and this is message. Now client public, it is going to publish it. What is going to publish? Topic ARN. Topic ARN means this one. This is the variable, the value of this, and message. This is message. Fine. Now deploy and test. इवेंट मतलब एक जो एक काम कर रहे हैं ना, उसको एक काम दे रहा हूँ, वही है इवेंट. देखो ये नल. सर ये इंसिडेंट भी बोल सकते हैं सर. क्या इंसिडेंट भी बोल सकते हैं सर इवेंट को, या फिर आप एक्टिविटी बोल सकते हैं. आप अपने तरफ से कुछ भी नाम दीजिए ना, AWS थोड़ी गुस्सा होगा. आप कुछ भी बोलिए, क्या जाता है. आप अगर आपका नाम चेंज कर लेंगे तो मेरा कुछ जाएगा, बोलिए. तो आप अपने तरफ से समझ लीजिए, कोई नाम लगा लीजिए. देखिए नल, नल में इवेंट माने हम लोग क्रिएट करते हैं सर, या फिर इवेंट जैसे कि यहाँ एक गाना बजाना का प्रोग्राम होगा, वो इवेंट होता है ना. हाँ, एक एनी एक्टिविटी. वही तो है, कोई एक्टिविटी इवेंट. ये देखो रिस्पॉन्स दिया नल. सो बैक टू योर मेल and check it. AWS notification, prod server stopped, please take care. Right, that means whenever my Lambda is going to execute, what happen? Mail, fire mail. So Lambda SNS is okay, this testing is okay, Lambda and SNS. But when Lambda is going to fire, when EC2 is down, then CloudWatch is going to trigger it. Right. So next CloudWatch. In this CloudWatch, we have to set rules. First, just I test it, okay, whether it is okay or not. It is tested, Lambda and SNS tested, it is okay. Now in rules, I am going to create a rule. Rule name RL20. Description optional, event bus default. This is rule with event pattern. Yesterday we continue
schedule, right? Today event pattern. Next, now build event pattern. Event source, select an event source from which event are sent. AWS event, other, all event, sample event, AWS event. Within this AWS event, AWS service. Which service? Which service? EC2. Now in EC2, what is actually event? Event is EC2 state change. EC2 state change कुछ है? EC2 instance state change notification. It is asking any state? No, specific state. Which state? When it is stopping and when it is stopped. That means 2 times mail is going to fire. 2 events. Okay? Any instance? No, specific instance. Which instance? Back to your instance, production server, instance ID. Copy it. Back to rule and paste it. If you want to add one more, just add. Okay? Number of instance you can add. If you want to remove any instance, you can remove it. Then next. Now question is, other options also, right? Other events, something. So it's like outer mail, there is someone who is interacting with S3 or something. Then also we can counter events. you can set number of 2 times I want to hit mail. Stopping is enough. Stopping is very simple. Once production server starts stopping, it is firing mail. But the difference between stopping and stop is very less. Very less. Few seconds matter. So I'm just choose it because I want to fire 2 times mail. Okay, it is going to send one mail when stopping started. When it is stopped, again one more mail. Just we will check that 2 times mail is sending or not. Okay. Next one is what is the target? Target क्या है? AWS cloud का? हाँ, AWS का कौन सा सर्विस? AWS का कौन सा सर्विस किसको टारगेट है? क्लाउड वॉच किसको टारगेट करेगा? लैम्डा. तो यहां पर लैम्डा फंक्शन. Which function? In this account, this function lambda SNS, right? Create a new role for this. Now use an existing role. Next, tag, review. So this is my CloudWatch rule. Okay. Now in my mail, only one notification mail is there, subscription mail. Okay. I deleted that mail. Now if I want to check it, our target is going to stop instance. Now it is stopping. Then it is going to stop. Back to your mail, and we have to check. This is subscription mail. If it is sending one mail, then it is okay. Otherwise, we have to check again. EBS SBI account statement.
is not sending an email because it is already stopped. हेलो सर। सर आपने वो रूल दूसरा लगा दिया वहाँ पे, RL20 आपको सेट करना था लेकिन कोई और सेलेक्ट किया था अभी। एक मिनट रुको। हाँ देखता हूँ। चलो delete it. So let's create once more rule because lambda and SNS is tested. Okay, when I execute lambda it is tested, but when I am going to stop this instance, what happen? CloudWatch is going to tend and CloudWatch is going to trigger the lambda. So again start it and create once more rule. Create rule. सर को स्टार्ट करना पड़ेगा सर, क्रिएट करना इंस्टेंस को स्टार्ट करना पड़ेगा। इंस्टेंस स्टॉप होगा तभी ना ये CloudWatch हिट करेगा। अभी आप स्टार्ट किए ना सर। इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे तो स्टॉप करके चेक करना है ना। तो स्टॉप रहेगा तो CloudWatch तो काम नहीं करेगा। तो रूल बना रहना। our rule name is suppose mnrl20 default event now event is event source AWS event or event bridge pattern event AWS event all event also you can set, but our event is AWS event. What is my event? AWS service. So which service? EC2. EC2 is my event, na? Maybe our that EC2 position, what I choose na event type, that is wrong. स्टेट चेंज ये सर आप वेरिफिकेशन करना चाहिए। मैंने ये लिया था, मैंने वो नहीं दिया सर आप। ये लिया था सर स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। रिजर्वेशन के ऊपर वाला दिया, स्टेट चेंज वाले दिए, ये दिए थे पहले आप। मैंने ये दिया था स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। EC2 instance state change notification এটাই হওয়া উচিত। চলো স্টেট চেঞ্জ দেখা যাক এটা। EC2 AMI स्टेट चेंज, AMI स्टेट चेंज तो नहीं होना चाहिए। AMI स्टेट चेंज क्यों होगा? EC2 का AMI अगर चेंज हुआ तो ये इंस्टेंस स्टेट चेंज यही होना चाहिए। इंस्टेंस स्टेट चेंज स्पेसिफिक इंस्टेंस सॉरी स्टॉपिंग एंड स्टॉप्ड और स्पेसिफिक इंस्टेंस। सर कॉपी द ये क्या बोल रहा था, दोनों अगर होगा तब दो बार मेल फायर होगा इसका, दो बार करेगा सर। दो बार मेल फायर करेगा, एक बार स्टॉपिंग एक बार स्टॉप के लिए। हाँ তুমি এখানে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছিলে, কি একটা জিজ্ঞেস করছিলে যেন এখানে আরো কিছু অপশন আছে। হ্যাঁ EMI তো হবে না, ওটাই হবে নোটিফিকেশন। হ্যাঁ ক্লাউড হচ্ছে একটা মনিটরিং টুল, ওকে যখনই আমি বলে দিয়েছি ওই ইনস্ট্যান্সটাকে ও ওটাকে মনিটরিং করবে। হ্যাঁ মানে আমি তো একটা একটা কিছু তো রুল সেট করব না, তবেই তো কাজ করবে। রোল রোলটা হচ্ছে ল্যামডা EC2 কে যখন স্টপ মানে স্টপ হচ্ছে বা কিছু হচ্ছে SNS কে ইউজ করছে। ল্যামডা SNS EC2 এগুলো সবই হচ্ছে একটা সেম লেভেলের সার্ভিস। একটা সার্ভিস আরেকটা সার্ভিসকে ইউজ যদি করতে চায় তাকে ওকে পারমিশন দিতে হবে। ওই রোলটা বানিয়ে ওকে পারমিশনটা দিয়ে অ্যাটাচ করিয়ে দিলাম। ওকে, হোয়াট ইজ আওয়ার টার্গেট? AWS service. Which service?
যদি EC2 টার্গেট হয় তো কি করবে EC2 কে নিয়ে? টার্গেট মানে কি হয় যেটা কি নিয়ে কিছু করবে ক্লাউড ওয়াচ যেটা দিয়ে ক্লাউড ওয়াচের কাছে when cloud watch is going to active when EC2 is down. So when EC2 is down, CloudWatch activated. Now what is the CloudWatch job? It is called the Lambda. Trigger the Lambda. Lambda is going to send the mail with the help of SNS. ঠিক আছে, এই হচ্ছে রিলেশন। So here it is Lambda function. Now which function? Lambda function. Select and Lambda function. Lambda SNS, most probably this one. Use execution role recommended. I'm not going to change here. Role name. হ্যাঁ, পারমিশনের জন্য ওখানে বাই ডিফল্ট বলেছে রেকমেন্ড করো, রেকমেন্ডেড হচ্ছে ডিফল্ট, লাস্ট বার চেঞ্জ করেছিলাম। সো রোল ইজ ক্রিয়েটেড। নাও উই হ্যাভ টু চেক ওয়ান্স মোর। Stop the instance. দেখো একবার এসছে once it is going to hit because server is stopped, please take care. Once more it is going to hit. Okay, once more it is going to hit once it is stopped. This is for stopping. Let it be stopped. Notification 2. Okay, new notification. So 2 times it is going to hit. তাহলে তোমাকে দুবার লিখতে হবে বা কোডটাকে ওইভাবে লিখতে হবে। হ্যাঁ, সব কিছু করা যাবে, তোমাকে ওই পাইথন বোটো কোড বা জাভা বা কোনো একটা কিছুতে লিখতে হবে। ঠিক আছে, অনেক মানে অনেকগুলো অপশান আছে মানে ল্যাঙ্গুয়েজের, জাভা নাও, ডটনেট নাও, নোড জেএস নাও, পাইথন নাও। ভোটার কোড না না, এ নেট থেকে ঘাটাঘাটি করতে হবে বা নিজেকে লিখতে হবে, নেটে অ্যাভেলেবল। ওকে, চেক ইট। ইউর প্রড সার্ভার স্টপ, প্লিজ টেক কেয়ার। এগেন সেম। Same, right? 2 times. So back to delete it. Instance start. Now it is running. Mail also okay. Just once more stop and check it. Again notification. Right, once more it is going to show. So this is Lambda, AWS Lambda, scheduling and event base. Right, I am going to send one requirements in this group. You try it. Okay, documentation also there, I think. With the help of documentation, try it. তোমাদের ল্যামডাটা যদি ক্লিয়ার না হয়, রাত্রি 9টার ব্যাচে জাস্ট EC2 কমপ্লিট হয়েছে, কালকে স্টোরেজ স্টার্ট হয়েছে, ওখানে ল্যামডা হবে। স্টোরেজ কালকেই স্টার্ট হয়েছে। না না, S3 ভিডিওটা কি পেয়েছো? ওই গ্রুপে নেই না? আচ্ছা, আজকে অ্যাড করিয়ে দেবো। ওকে, ওয়ান বাই ওয়ান নাও। We have to terminate my instance Lambda
Role is not necessary. SNS also important. Delete me. Lambda function we have to delete. Then CloudWatch rule. ক্লাউডওয়াচে আমি আগের দিন পড়িয়েছি এই রুলসের মধ্যে তুমি যখন ক্রিয়েট করতে যাবে ইভেন্ট অ্যান্ড শিডিউল, শিডিউলটা হচ্ছে ক্রন জবের মতো টাইম বেসড, ঠিক আছে? ভিডিওটা এই ব্যাচের ভিডিওটা পেয়েছো কি? এই ব্যাচে আছো কি? এই ব্যাচে কালকে ভিডিও পাঠিয়েছি, দেখে নিতে পারো একবার ওটা। তোমার